फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं आपका उज्जवल सर आज एक न्यू टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं, वो है किंगडम फंगी। बट बिफोर आई स्टार्ट, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग कैसे हो, हाउ आर यू पीपल डूइंग? फाइन, ये होपफुली यू आर डूइंग बेटर, यू आर डूइंग गुड। और इस साल नीट का जो एग्जाम था 2025 का, वो आप सब लोग जानते हो, दैट वाज अ लिटिल बिट कंसेप्चुअल। सो देखो, हम वार में जाएंगे, युद्ध करने जाएंगे और हमारे पास वेपन्स नहीं रहेगा, वो तो नहीं होने वाला है ना। सो चलो, वेपन्स क्या है हमारे पास? नॉलेज। सो वो नॉलेज हम एनसीईआरटी के थोड़ा सा बाहर हम जाएंगे, वी आर गोइंग टू गो आउट ऑफ द एनसीईआरटी। इसीलिए आप पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ। फाइन, राइट डाउन ऑल द इंफॉर्मेशन दैट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अभी। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड कमेंट करना नहीं भूलना, आप किस तरह के वीडियो मांग रहे हो। यस, सो माय डियर स्टूडेंट्स, तैयार हो जाओ विद अ न्यू मोड, अ न्यू थॉट ऑफ लर्निंग। लेट अस स्टार्ट विद किंगडम फंगी। सो किंगडम फंगी, दिस किंगडम फंगी, व्हेन वी टॉक अबाउट किंगडम फंगी, दिस इज व्हाट किंगडम फंगी लुक्स लाइक, है ना। फंगस तो आप लोग शायद देख लिया, ऐसे पेड़ के ऊपर ऐसे आपने देखा विद वुडन लॉग, जो कटा हुआ लॉग है, वहां पे हमने ऐसा फिगर तो देख लिया। सो ये जो है ये फंगस है। यहां पे बहुत सारे दिख रहे हैं, देखो ये फंगस में ये जो स्टॉक है, तो ये स्टॉक है, दिस इज द फ्रूटिंग बॉडी, दिस इज द फ्रूटिंग बॉडी एंड दिस इज द स्टॉक। एंड दिस स्टॉक तो क्या कहते हैं? दिस स्टॉक इज कॉल्ड हाइफी। दिस स्टॉक इज कॉल्ड हाइफी। सो नॉर्मली ये वुडन लॉग में करता क्या है? बिकॉज इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंगी? वी नो दैट दे आर सैप्रोफाइट। थोड़ा सा इसके इंफॉर्मेशंस चलो हम थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे देख लेते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ टॉपिक कॉल्ड किंगडम फंगी। किंगडम फंगी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट किंगडम फंगी, it contains what? It contains all multicellular. It contains all multicellular eukaryotes. All multicellular eukaryotes. But what is their mode of nutrition? Their mode of nutrition is they are saprophytes. The mode of nutrition is saprophytes. Yes, my dear students, what is the meaning of the term saprophyte? Saprophyte मतलब क्या है? Sapro means rotten है. Rotten. So those organisms which depends upon dead and decaying organisms, we call them to have saprozoic or saprophytic nutrition. Now, ये normally saprophyte होते हैं and also some of them are parasitic too. Some of them are parasitic. Now, kingdom fungi. So whenever we talk about kingdom fungi, क्या इमेज हमारे पास आता है? अभी जो फिगर आपको दिखाया गया है, that is a figure which comes in our mind. मशरूम के बारे में, the moment we talk about fungi, either मशरूम आएगा या आएगा और एक एड, और वो एड है आपने टेलीविजन में देखा इजगार्ड का। That means फंगस कहां पे होते हैं? जहां पे मॉइस्चर जमते हैं, जहां पे शोल्डर पे होता है, ग्रॉइन एरिया में होता है, आर्मपिट्स में होते हैं, जहां पे मॉइस्चर रहेगा, we can expect fungal growth over there. And it can cause ringworm. It can cause ringworm. It is one of the example of parasitic fungi. Yes? So, fungus मतलब दो चीज हमारे पास आएगा। एक है मशरूम। ये मशरूम को क्या कहते हैं? This is mushroom. And this is the edible fungus. This is the edible fungus. क्या है ये? ये edible fungus है. And this edible fungus is Agaricus. Agaricus campestris. The edible fungus is Agaricus campestris. ये है edible fungus. Now you can see मैंने root की तरह कुछ structure बनाया है. And what is this structure? The root-like structure is called rhizoids. And they have got a stem-like structure which is called as hyphae, or mycelium. Hyphae or mycelium. We're going to talk about that. Mycelium. And what is the upper part? Upper bulge out part is called fruiting body. It's called fruiting body.
सो ये है एगारिकस कैम्पेस्ट्रिस विच इज एन एडिबल फंगस, उसका एग्जांपल. देयर इज अनदर एडिबल फंगस कॉल्ड एगारिकस बाइस्पोरस. एगारिकस बाइस्पोरस. This is also edible fungi. And we are going to talk about some morels, buffels, truffles. ये सब edible fungi है, and we are going to talk about them also. So basically, this is Agaricus campestris. Now, my dear students, ये हर एक भाषा में इसका एक खराब टर्म से इसको बुलाया जाता है. Why that is so? कभी सोचा आपने? In Bengali, ये मशरूम को क्या कहते हैं? इस मशरूम को कहते हैं बैंगेर छाता. Fine. In Hindi, hopefully it is called as कुक्कर मुत्ता. खराब नाम है. ये खराब नाम क्यों है? Because ये एडिबल फंगी है. ऐसे ही देखने में और एक तरह का फंगी है which is highly poisonous and the name of that is Amanita muscaria. It is a poisonous fungus. Fine. तो लोग ये पॉइजनस फंगस को ना खा ले, इसलिए इसका नाम हर एक भाषा में नेगेटिव नाम है, इसका खराब नाम है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन. ये जो फ्रूटिंग बॉडी है, ये फ्रूटिंग बॉडी के अंदर अगर नीचे की तरफ वेंट्रल पार्ट में देखोगे, सो दे हैव गॉट सम स्लिट लाइक स्ट्रक्चर. इनसाइड दोज दे हैव गॉट हैप्लॉइड स्पोर्स. सो ये एन हैप्लॉइड स्पोर्स यहां पे है. So they have got haploid spores. So basically, whenever we talk about fungus, ये हमें fruiting body at the top देखने को मिलेगा. Now let's talk about the history. Fungus, who is called as the father of mycology. Father of mycology. कौन है? Father of mycology is Micheli. And who is called as the father of Indian mycology? Father of Indian mycology is Edwin John Butler. He is called as a father of Indian mycology. And एक साइंटिस्ट जो इंडियन है, बीबी मुंडकर, he is a scientist जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन में वो काम करते थे, और वहां पे फंगस के कुछ इंफॉर्मेशंस, कुछ बुक्स उन्होंने लिखे थे. हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी? एडविन जॉन बटलर. नाउ दिस इज अबाउट माइकोलॉजी. तो ये माइको वर्ड कहां से आया? वेयर फ्रॉम द टर्म माइको हैज कम. द टर्म माइकोलॉजी, द टर्म माइको हैज कम फ्रॉम माइसीलियम. And what is mycelium? Normally क्या होता है? Normally क्या होते हैं? ये जो हाइफी है, बहुत सारे हाइफी एक साथ रहते हैं. And many of the hyphae when remains closed, compact together, we call it hypha, or we can also call them as mycelium. Now, if you see the kingdom fungi, normally ये kingdom fungi के 4 क्लास होते हैं. There are 4 different class of kingdom fungi. NCERT बुक में ये 4 फंगस के बारे में बात किया गया है. Number 1 is Phycomycetes. Number 2 is Basidiomycetes or Ascomycetes. Number 3 is Basidiomycetes, and number 4 is Deuteromycetes. My dear students, see, in every other class what we can see is mycetes common hai. You can see mycetes is a very common term. Now what is the meaning of mycetes? Mycetes has come from again mycelium. So whenever we come across the term, a word with suffixing mycetes, that means it is nothing but a fungus. Now, ये फंगस में mycelium के morphology, ये जो 4 क्लास हुए हैं, these are the 4 class. These 4 class, ये किसके बेसिस पे ये 4 क्लास किए गए हैं? In what basis the 4 class has been made? And fungal kingdom fungi
on what basis they have been classified into 4 different class. So किस basis में उनका classification किया गया है? So let us get into that, and it's a very very important question for NEET. ये तीनों टॉप पॉइंट्स आपके ऑप्शन में देंगे और the last option will be given as all the above. So it's very very important. किस बेसिस में क्लासिफिकेशन किया गया है? The first one is on the basis of their morphology of mycelium. Morphology of mycelium. The second one is on the method or mode of spore formation. Mode of spore formation. Mode of spore formation. And the third is the formation of zygote. You know, meiosis in zygote. Meiosis in zygote. Resulting in meiosis in zygote. Resulting in what? Spore formation. Fine. Meiosis in zygote resulting in spore formation. Now, what is it? Morphology of mycelium, mode of spore formation, and this meiosis in zygote in spore formation. This is one of the example of a sexual reproduction. Let us a little bit change it into another term called the type of fruiting body. Type of fruiting body. Type of fruiting body. So this is the third step of sexual reproduction. So on these 3 bases, that is morphology of mycelium, mode of spore formation, and the type of fruiting body, these are the main bases. इसी के ऊपर kingdom fungi has been classified into these 4 classes. Now, whenever we talk about fungus, that means we have to also talk about their reproduction. We have to also talk about their reproduction. किस तरह से reproduction करते हैं वो? Because we have talked about the mode of nutrition. Now, the type of reproduction. Number 1 is they can reproduce vegetatively. They can reproduce by vegetatively. Second, they can reproduce by asexual mode of reproduction, and also they can reproduce by sexual mode of reproduction. Now, when we talk about vegetative one, they can go for vegetative reproduction by fragmentation. What is the meaning of fragmentation? मतलब क्या है? एक माइसिलियम के टुकड़े हो गए, स्मॉल टुकड़े हो गए, and each of the parts can make a new life. That is called fragmentation. ये क्या होगा? ये माइसिलियम है, माइसिलियम के टुकड़े हो गए, and they have now made a new life. The second type is budding. बर्डिंग होगा यूनिसेलुलर एल्गी में, यूनिसेलुलर फंगस में, और उसका नाम क्या है? यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस. ये एक्सेप्शनल फंगस है विच शोज बर्डिंग. यीस्ट, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी. क्या नाम है? इट इज सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी. सेरिवेसी इज द नेम ऑफ द yeast. Unicellular yeast है ये, unicellular fungus है, showing budding. And the last one is fission. Fission, it is shown by schizosaccharomyces. Schizosaccharomyces. This shows what? Fission. Fission मतलब टुकड़े हो जाएंगे, and each टुकड़ा, हर एक टुकड़ा एक न्यू लाइफ बनाएगा, एक न्यू फंगस बनाएगा. So that is very very important about vegetative reproduction. Under asexual mode of reproduction, they can show 2 types of asexual reproduction. Number 1, they can show by the help of sporangiospore. और ये sporangiospore, ये नॉर्मली 2 तरह के हो सकते हैं. They can occur endogenously. ये जो sporangiospore है वो अंदर ही अंदर बन सकता है, मतलब फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, या एक्सोजीनसली हो सकता है, फ्रूटिंग बॉडी के बाहर बन सकता है, एक्सोजीनसली. ओके, नाउ स्पोरांजियोस्पोर, व्हेन वी टॉक अबाउट स्पोरांजियोस्पोर, ये 2 तरह के हो सकते हैं. दे कैन बी, नंबर 1, दे कैन बी एप्लानोस्पोर, और एक है जूस्पोर.
सो कौन सा मोटाइल है, कौन सा फ्लैजिलेटेड है? जूस्पोर्स आर मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड. उनके पास फ्लैजेला है, सो दे आर मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड. एंड एप्लानोस्पोर आर नॉन फ्लैजिलेटेड एंड नॉन मोटाइल. नॉन फ्लैजिलेटेड, इनके पास कोई फ्लैजेला नहीं है, एंड दे आर नॉन मोटाइल ऑल्सो. दे आर नॉन मोटाइल. Fine. This is aplanospore, which is non-flagellated, non-motile, and zoospore, motile and flagellated. So whenever we talk about the next one after sporangiospore, the next one is about after sporangiospore we have got conidiospore or conidiospores. और ये conidiospores बनते हैं कहां पे? एक्सोजिनसली. और एप्लानोस्पोर और जूस्पोर बनते हैं एंडोजिनसली, अंदर ही अंदर फूटिंग बॉडी में बनते हैं. आई एम गोइंग टू शो यू द डायग्राम ऑफ दिस अबाउट कोनिडियोस्पोर्स आल्सो. एक्सोजिनसली ये बाहर बनते हैं कोनिडियोस्पोर्स. और ये कहां पे बनते हैं? इन द एग्जांपल इज पेनिसिलियम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12 स्टूडेंट आल्सो. पेनिसिलियम ये एंटीबायोटिक चैप्टर में हम पढ़ेंगे अंडर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. पेनिसिलियम. Now, what about sexual reproduction? The sexual reproduction can be, the sexual reproduction, ये किस तरह का होगा? The sexual reproduction normally takes place by zygospore formation. Second, oospore. Third, basidiospore. कहां पे रहेगा? बेसिडियोमाइसिस के अंदर मिलेगा ये बेसिडियोस्पोर. एंड से एस्कोस्पोर कहां पे मिलेगा? इन एस्कोमाइसिटीज. नाउ हाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होते हैं? लेट अस गेट इनटू दैट. नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉर्मली किस तरह का होता है? देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Number one is plasmogamy. Star mark for NEET examination. Plasmogamy. Gamy मतलब क्या है? Gamy मतलब marriage है. Gamy means what? Gamy means marriage. Now plasmogamy means the marriage between the two types of what? Strains. Where? Cytoplasm के साथ. ये है एक strain. Say for example, this is one of the हाइफी विच इज नेगेटिव स्ट्रेन और ये है पॉजिटिव स्ट्रेन. फाइन. फंगस में तो हम मेल और फीमेल फंगस नहीं कह सकते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द सेल. ये इसका न्यूक्लियस है. दिस इज द साइटोप्लाज्म. दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म. सो नंबर 1 इज प्लाज्मोगैमी. नंबर 2 इज कैरियोगैमी. अगेन गैमी मतलब मैरिज. कैरियो मीन्स व्हाट? न्यूक्लियस. द मैरिज बिटवीन 2 न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोगैमी. And the last one is meiosis in zygote, resulting in formation of haploid spore. So there are 3 steps. अब एक एक करके हमें समझना पड़ेगा ये कैसे बनता है. How the sexual reproduction takes place. Before that, ये समझना है हमें ये हमने क्या बनाया है. To understand this, we have to understand about the next topic. What is the morphology of mycelium? Morphology of mycelium. Mycelium are of 2 types. They can be aseptate and sinusotic. What is the meaning of that? Aseptate मतलब न्यूक्लियस रहेगा बट बीच में chitin cell wall नहीं रहेगा. There is no cell wall. So this is called multinucleated condition and without any septa is called aseptate. Septa मतलब क्या है? Septa मतलब wall. So what can be the second one? The second one can be septate and branched. The second type of mycelium can be septate and branched. See, these are the cross walls. ये देखो सेल वॉल बना हुआ है यहाँ पे और ये ब्रांच है. ये जो सेल वॉल है किससे बना है? We know it's a tough polysaccharide called chitin. So they can be septate and branched, and the morphology of mycelium can be aseptate and sinusotic. So ये जो दिखाया गया है यहाँ पे पॉजिटिव स्ट्रेन फंगस आया, नेगेटिव स्ट्रेन का फंगस आया. 2 of the nucleus
दिस इज एन एंड दिस इज एन बिकॉज दे आर हैप्लॉइड स्पोर. सो एन एंड एन ज्वाइन करने के पहले क्या होगा, दोनों साइटोप्लाज्म मीट करेंगे. द गैमी, द मैरिज बिटवीन साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी. तो पहले क्या होगा, प्लाज्मोगैमी मीट करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी. एंड उसके बाद टू ऑफ द न्यूक्लियस आर गोइंग टू कम क्लोज टुगेदर एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म व्हाट, 2n. बट ये जो टू न्यूक्लियस पास आएंगे, n plus n, sometimes they remain as n plus n stage. They have to come close together. पर हम बंगाली में क्या कहते हैं, माला बदल. सो वो माला बदल स्टेज में रह जाएंगे बिकॉज माला बदल में क्या होता है, माला एक्सचेंज होता है वर और वधु के अंदर. नाउ इस स्टेज में अगर वो सेल्फी खींचे और थोड़ा वेट करे तो उसको क्या कहेंगे हम, n plus n स्टेज इज कॉल्ड डाई कैरियन फेज. क्या कहेंगे उसको, डाई कैरियन फेज. डाई मतलब टू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस. सो आफ्टर सम टाइम अल्टीमेटली बनेंगे क्या ये, आफ्टर सम टाइम दे आर गोइंग टू बिकम 2n. दे आर गोइंग टू बिकम 2n जाइगोट. सो डाई कैरियन फेज हर एक क्लास में नहीं मिलता है, ये मेनली मिलता है बेसिडोमाइसीटीज एंड एस्कोमाइसीटीज में. ओके, मियोसिस इन जाइगोट. अभी तो जाइगोट बन गया, अब जाइगोट में क्या होगा, जाइगोट इज गोइंग टू शो मियोसिस. जाइगोट इज गोइंग टू शो मियोसिस टू बिकम, टू मेक व्हाट, हैप्लॉइड spores, to become haploid spore. This is overall idea about the reproduction in fungi. Now on what basis we are going to classify fungi, किस बेसिस में हम फंगी को क्लासिफाई करेंगे, 3 पॉइंट के ऊपर. नंबर 1, morphology of mycelium. Number 2, the method of or the mode of spore formation. Number 3, the type of fruiting body. Normally fruiting body को क्या कहते हैं, कार्प कहते हैं. So फाइकोमाइसीटीज में फाइकोकार्प, बेसिडोमाइसीटीज में बेसिडियोकार्प. फाइन. तो ये जो कार्प है, फ्रूटिंग बॉडी, उसमें क्या होता है, हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. बट माइंड यू, डिफरेंट क्लास के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फाइलम, विद द क्लास फाइकोमाइसीटीज फर्स्ट, देन एस्कोमाइसीटीज, देन बेसिडोमाइसीटीज, देन ड्यूट्रोमाइसीटीज. डिफरेंट इसके लिए हम वीडियो बनाएंगे. बट माइंड यू स्टूडेंट्स, अगेन लेट मी रिपीट द सेम थिंग. आपके पास जितने सारे वीडियो इसके पहले आपको दिखाया गया है, हैव यू रिटन दोस नोट्स? आप क्या लिख के पढ़ रहे हो, आप क्या जोर से पढ़ रहे हो, आप क्या सिर्फ पढ़ रहे हो और लिख नहीं रहे हो? इफ यू आर नॉट राइटिंग एंड इफ यू आर नॉट रीडिंग इट लाउडली, ये सब्जेक्ट आपके पास नहीं आने वाला है, ये दूर भागेगा. एंड माइंड यू, as because you have taken biology and as because you are aspiring to become doctor, 360 out of 360 आपको मिलना है. 360 out of 360 आपको लाने के लिए you have to write. And mind you, थोड़ा इमोशंस रखो अपने पढ़ाई के ऊपर. Have some emotions on. और ये नॉर्मली जो रील्स आप देखते हो थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा बाबू. हाँ, so you have to give more of टाइम इन स्टडिंग. एक बार आपने ये वीडियो देख लिया, आपने नोट्स बना लिया, अब नोट्स को पढ़ो और एनसीईआरटी को भूलो मत. गो लाइन बाय लाइन ऑफ एनसीईआरटी. लेट मी अगेन रिपीट इट बिकॉज रिपीटिशन इज द की ऑफ लाइफ. ऑल द वेरी बेस्ट.